Respected viewers, Assalamu alaikum. I am Ghulam Murtaza Sandhu, Principal Government Comprehensive School, Model Town Gujranwala. I have started making videos about English grammar and especially review exercises of class 9 and 10 for the guideline of the poor students who can't pay English tutors fee. I request all of you to come forward to share your valuable knowledge with the students free of cost because Pakistani students need our attention to this aspect. If you find difficulty in video editing, let me know. I'll help you free of cost for the spread of English knowledge. Let's join hands to educate our coming generation to make Pakistan a prosperous country. Please watch this slide to share knowledge in detail. Thank you so much. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुहतरम सामीन, ये रिव्यू एक्सरसाइज नंबर 3 है क्लास 10 की और टेक्स्ट बुक का पेज नंबर 162 है। क्वेश्चन नंबर 19, माय फ्रेंड गेव मी द बुक। इसका करेक्ट पैसिव वॉइस हमने चूज़ करना है। तो माय फ्रेंड एंड पे होगा, तीनों पे एंड पे है, लेकिन गेव के साथ वाज या वर लगा के हम इसको दुरुस्त करेंगे। तो वाज गिवन वाली ऑप्शन सी ऑप्शन वाज गिवन वाली दुरुस्त है। पहली गलत है, आई हैव बिन गिवन, और दूसरी आई एम गिवन, दोनों गलत हैं, क्योंकि जब सेकंड फॉर्म आ जाए गेव तो उसके साथ वाज या वर प्लस थर्ड फॉर्म से ही ये दुरुस्त होता है। क्वेश्चन नंबर 20, काशिफ सेड टू मी, इज द मूवी इंटरेस्टिंग और बोरिंग? चूज द करेक्ट इनडायरेक्ट। अब यहाँ पे सेड टू लगा हुआ है, सेड टू मी की जगह आस्क्ड मी लगेगा, तो ए ऑप्शन दुरुस्त है, उसमें काशिफ आस्क्ड मी लगा हुआ है, लिहाजा ए ऑप्शन दुरुस्त है। बी और सी इसलिए गलत हैं कि वहाँ पे आस्क्ड नहीं लगा हुआ। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग and watching my video. Thanks a lot once again.